السلام عليكم، اسمي كريم. أنا طالب هندسة كمبيوتر في University of Huddersfield. رمضان يعني الحمد لله الفايب حلوة قوي هنا، والناس كلهم friendly و it's been great يعني the first 2 days. That's it. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak to all. Hello everyone, my name is Yusuf Hamad. I'm from Sudan, and luckily we're all here with the Islamic Society Iftar. My name is Gulzar Malik. I'm from India, Goa, and I'm studying here in the University of Huddersfield. I'm blessed to be a part of this open iftars organized by the Islamic Society of the University of Huddersfield. Hello everyone, my name is Muhammad Taha Khan. I'm the SU Equalities Officer and future President as well for the Student Union. Hi guys, my name is Rohit and I'm from India, and I'm the next activities officer for the year 23-24. So my name is Hamza Aziz Tariq and I'm from Pakistan. I came here in the University of Huddersfield's Ramadan as an iftar party or a get together for Islamic Society as well. Ramadan Mubarak guys, hope you guys all have a good Ramadan, and Ramadan Mubarak from ISOC and everyone. Ramadan Mubarak. My name is Shamal Iqbal. I'm here for the Masters program in BJ, and it's been 6 months I'm here in UK. So Alhamdulillah, I got a chance to be a part of this iftar meet hosted by our Muslim community. Assalamu alaikum everyone. Amazing iftar hosted by the Islamic Society of the University of Huddersfield. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'd like to wish you all a Ramadan Mubarak, and inshallah all your du'as are accepted. Ameen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again we are here with another vlog in which we are gonna show some experience. We're gonna share some experience which is about the open iftar, which is organized by the ISOC under the supervision of Maulana Muzambil, who is the Muslim chaplain here, and it's my first time in England, the iftar, and I'm invited in this open iftar. So let's see how it goes, because mera bhi pehli martaba hai, and I'm also will gonna explore that. So it's 6 months to go. I've been here. It's the first time I'm gonna join the one of the biggest Muslim gathering at here. So here we are at the university. Let's see how the preparation has gone. Hopefully everything has done, because I'm also the volunteer as well, so I have to do some work and chores as well. So डेकोर भी करना होगा, और कुछ इन्होंने मुझे कहा था that you have to collect the food from the point and come take to the building. So ये वाला भी काम होगा. Let's see किस तरीके से होता है, क्या होता है. तो मिलजुल के काम करेंगे. यही जो है वो भाईचारगी है, और यही इसी तरीके से मिलजुल के हम लोगों ने काम. Okay, so here we are, Osler building, जहाँ पे इफ्तार का एहतमाम किया गया है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपकी? रिकॉर्डिंग नहीं खराब? जी नहीं सर, चलता रहेगा, कोई बात नहीं. आपको भी पहले ही इफ्तार है? हाँ. एनीथिंग अच्छा लग रहा है यहाँ आके. ऐसा लग रहा है कि अपनों में आ गए, वरना तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था अकेले घूम रहे हैं. बिल्कुल सही. मुस्लिम वाली वाइब आएंगे अभी इंशाल्लाह. जस्ट बिकॉज़ ऑफ रमज़ान. बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह. सो आज का सीन कुछ इस तरीके से. आप कितने बजे आए थे? मैं आया था 7:30. अच्छा, जो मारिया ने कहा था. ठीक है, डन हो गया बॉस. सो अभी तक आपको पता है मेन्यू में क्या है, सेटिंग क्या है, आज के दिन का लेआउट क्या है? कुछ भी नहीं पता. कोई बात नहीं, अभी जान लेंगे थोड़ी देर में. आ गए ना मैदान में. वाटर बॉटल्स नज़र आ रही है, जूसेस नज़र आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, और ड्रिंक्स वगैरह है, माइल्ड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह. बाकी प्रिपरेशन चल रही है. बलून पे हवा भरी जा रही है. हमारी हवा निकल रही है क्योंकि टाइम हो रहा है ओवर. बिल्कुल ऐसे ही है. ओके जी, मैं अभी असर पढ़ के मैं यहाँ पे आया हूँ. तो बाकी कुछ डेकोरेशन हो गया है, कुछ बाकी है डेकोर का, जिसमें ब्रदर और सिस्टर्स दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह
कंधे से कंधा मिला कंधे से मिला के शाना बचाना. ठीक है सर. السلام عليكم اسمي كريم أنا طالب هندسة كمبيوتر في University of Huddersfield. رمضان يعني الحمد لله الفايب حلوة قوي هنا والناس كلهم friendly و it's been great يعني the first 2 days. That's it. So here I got the chance to drive that trolley, food trolley. So इसके ऊपर फूड वगैरह सारा रखा गया था और इसके बाद जो है इस फूड को अंदर ले जाया गया था बिल्डिंग के अंदर. और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि हम यहाँ पे ऐसी जगह पे आके अपने मुल्क को अपने ईमान को ताज़ा भी कर रखे हुए हैं और मुल्क को ताज़ा इस तरह रखे हुए हैं कि सब एक साथ मिल के. तो पाकिस्तान का मतलब है कि सबको एक साथ रखो, पाकिस्तान को नहीं खाली पाकिस्तान के साथ जितने और मुस्लिम ममालिक हैं हम सबको साथ रखो. तो हम वो काम कर रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह. दूसरा ये कि तमाम उम्मत मुस्लिमा एक साथ यहाँ पे यूके में एक छोटे से शहर में हडर्सफील्ड जिसका नाम है उसके अंदर सब एक साथ जमा हुए हैं और हम सब मिल के जो है वो अपने मुल्क का अपने मज़हब का नाम रोशन कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे कि हम इसको और ज़्यादा बढ़ा सकें, अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकें. Hello everyone, my name is Yusuf Hamad. I'm from Sudan and luckily we all here with the Islamic Society Iftar, which is bring all the international students, Muslim people in specific and Arab like as a secondary. So I'm very pleased, I'm very happy about like those people here gathering from girls and boys enjoying their Iftar, and inshallah they will all be blessed in this month and hopefully everything will goes as planned and hopefully we'll see you next year inshallah. My name is Gulzar Malik. I am from India, Goa, and I'm studying here in the University of Huddersfield. I'm blessed to be a part of this open iftars organized by the Islamic Society of the University of Huddersfield, and I wish everyone happy Ramadan. Hello everyone, my name is Mohammad Taha Khan. I'm the SU Equalities Officer and future President as well for the Student Union. I came here in Huddersfield University from Lahore, Pakistan, and I wanted to tell you today that we are sitting here for Iftar. So happy Ramadan to all the Muslims celebrating it, and hopefully this month will bring you happiness and blessings. Thank you. Hi guys, my name is Rohit and I'm from India and I'm the next activities officer for the year 23-24. So I would like to say Ramadan Kareem to everyone, all the people around the world who is celebrating Ramadan. So I'm just here to be part of it, just be part of everyone, to be in this culture. So I'm happy to be here and I'll see you all again. Thank you. My name is Hamza Aziz Tariq and I'm from Pakistan. I came here in the University of Huddersfield in Ramadan as an Iftar party or a get together for Islamic Society as well. It's a great experience that we are having a lot of people from different cultures, societies who are sharing their experiences in a Ramadan. Because Ramadan is his own experience to know about the people who are suffering from food and water and so in that way we can experience their pain as well. So I hope so everything would go well inshallah and we experience a new vibe and we all been motivated to help a lot of those people who are not able to have food and water inshallah. Thank you.